Hello everyone, welcome back to another video of Core Java series. जो थ्री का आम शिखा जावा कमेंट्स कि कमेंट्स कौन कमेंट्स केते प्रकार टाइप्स अच्छी आम एक्जाक्टली कौन पाए कमेंट्स लिखा और शिखा तो चलो without wasting any time let's get started. Since there are multiple comments, so the first question will be in our mind every time whenever we learn, right? What? So basically in this video, so what are the comments in Java? So for that, in Java, comments are lines that in the program, right, that are ignored by the compiler, right? Whatever we will write, basically that's a comments and that will basically ignored by the compiler. जहाँ हमें लिखिबा, so say particular statement बेसिकली आम कंपाइलर इग्नोर कर दिए माने एग्जीक्यूट करेनि तो जब एग्जीक्यूट करेनि तुम भाव तो कहीं गोटे डेवलपर लिखती कमेंट तो रीजन तो बहुत सारा राइट सो दे आर रिटेन टू एक्सप्लेन द कोड कि आम जहाँ गोटे कोड लिखी दिस इज नॉट लाइक इन रियल टाइम राइट रियल टाइम रे आम एमती भी माने जहाँ भी लिखुंट लॉजिक दैट इज नॉट सिंपल राइट जो गोटे कम्प्लेक्स लॉजिक लिखा जाऊँगी टू एक्सप्लेन दैट कम्प्लेक्स लॉजिक आम कमेंट्स लिखा जो द्वारा कि जेकोसी अदर डेवलपर आसवे देख से लॉजिक को से फर्स्ट टाइम जो देखो ना किसी बुझा पड़ोनी अंटिल अनलेस टिके टाइम स्पेंड कलापर तो से टाइम रे बुझा पड़ापी कि जल्दी बुझापी आम देखा कि एक्सप्लेन करवा एक्चुअल से पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ लॉजिक या मेथड जहाँ भी लिखी एक्चुअल कौन काम करुच्ची तो गोटे एक्सप्लेनेशन देवाई कमेंट्स यूज करा जाए राइट नेक्स्ट मेक इट रीडेबल एटलिस्ट यू विल अंडरस्टैंड इफ यू मेक इट रीडेबल कमेंट्स राइट यू विल अंडरस्टैंड कि एक्जाक्टली तार रीजन कौन देन हेल्प अदर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक जमी कहली तुम लिख जदि अलग डेवलपर जी भी रिविजिट कर तुम कोड को ताको इजीली बुझा पड़ो आउ टेम्पोरारीली डिजेबल करने लेट्स से तुम किसी कोड लिखिच राइट तुम माइंड आसला कि ये कोड चलबनी ताको कंप्लीटली न रिमूव करके जस्ट कमेंट करदेव कमेंट करदे कौन हम कंपाइलर इग्नोर कर आउ नेक्स्ट जहाँ भी कोड लिखिच एग्जीक्यूट कर वी विल डू एवरीथिंग प्रैक्टिकल तो ये खाली थ्योरी बुझ कि एक्जाक्टली कौन कमेंट आ कौन पे आम यूज कर राइट कमेंट यूज कर टू एक्सप्लेन द कोड टू मेक इट रीडेबल टू हेल्प अदर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द कोड एंड देन टेम्पररी जदि किसी कोड किसी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट आमको इग्नोर करार अच्छी कि डिजेबल करार अच्छी न रिमूव करके देन वी कैन यूज कमेंट्स रिमेंबर कमेंट्स आर फॉर ह्यूमन्स जमी कहली जहाँ भी आम लिखुंट आम कंपाइलर कि जेवीएम नुह दैट इज ओनली मीनिंगफुल और बेनिफिटेड फॉर द डेवलपर जे भी देखिए तो दैट इज नॉट फॉर कंप्यूटर सो दैट इज व्हाट इवन आई एक्सप्लेन द सेम राइट नेक्स्ट देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट second one is multi-line comments and the third one is the documentation comment. So we will understand everything. So first we will understand कि single line comment कौन. So first जान लो कि comment actually कौन. comment होची जदि किसी line का हमें temporarily disable करार अच्छी किंबा हम compiler द्वारा ताको ignore करार अच्छी then we will go for comments. तो first होची single line comment. Single line the name itself it says the meaning right. Single line comment होची जो आम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेथड भीतर लिखिले तो से पर्टिकुलर जो लिखिले आम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ताको जो कमेंट करार अच्छी तो डबल स्लैश यूज करार अच्छी डबल स्लैश देख ये ऊपर भी जो आम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखी जदि गोटे किसी एक्सप्लेनेशन किसी कमेंट्स ऐड करार अच्छी देन डबल स्लैश ऐड कराला देन दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट बोल लिखाला right our program author kariba then I will show you exactly how we can do it. Then when you use double slash right everything after it
on that line it becomes a comment. Means double slash देला पर जहाँ हम लिखिले ताको कहा जाए comment आउ this will ignore by compiler ignore by compiler, right? It mostly used for small explanation and short notes. Since it is a single line comment मतलब गोटे लाइन रे जदि किछि एक्सप्लेन करियार अछि किबा short notes kind of thing जदि तुमको देवार अछि गोटे लाइन रे, then you can go for single line comment. Then the type 2 basically multi line comment. Let's understand multi line comment. multi line comment कोन जेमति कि ना रे मीनिंग रहै अछि multiple lines रे जदि किछि तुमको डिस्क्राइब करियार अछि, then we can go for multiple comment किबा multiple statement को जदि तुमको डिसेबल करियार अछि, then we can go for multi line comment. So in that कि बेसिकली कोन अछि तुम एते कंफ्यूज होबार नै, जदि कंफ्यूज होछ कंफ्यूज होनी आमे प्रैक्टिकली करके देखिबा सिस्टम रे, राइट? मु खाली बे थ्योरी बुझै दोछि जो द्वारा कि आमे प्रैक्टिकल कले तुम इजी हबो आ तुम रिलेट कर पारबो जा बे थ्योरी आमे डिस्कस कले. तो ये नोट्स भी मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दिबी, तुम नोट्स जाकी परे रेफर कर पारबो जतबेले तुम चाहबो. नेक्स्ट रहला तो जतबेले आमे मल्टी लाइन कमेंट बेसिकली यूज करछन तो ताको रिप्रेजेंट करबा स्लैश स्टार देन आ भीतर जा स्टेटमेंट रहला देन स्टार स्लैश जेमिति ओपन कले सेमिति क्लोज करिया पड़ो. तो ए भीतर जा रहला दिस विल बी कमेंट्स जहाँ स्टेटमेंट रहला कमेंट्स तो सेमिति दिया जाय छिटी स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश. दिस इज ए मल्टी लाइन. देखो दुईटा लाइन रे अछि ताको तीनटा लाइन चारटा लाइन पांचटा लाइन भी दे परबा तो ताको कहा जाय मल्टी लाइन कमेंट. तो बेसिकली कोन पई देखो कोन पई तो हमें बुझिबा बट दिस इज स्टार्टिंग दिस इज एंडिंग ता भीतर जहाँ भी जेतके लाइन भी स्टेटमेंट रहला ताको कहा जाय मल्टी लाइन स्टेटमेंट कि मल्टी लाइन कमांड sorry comment multi line comment. If you want to write comments in multiple lines then we use start and end, that is star slash and sorry slash star then star slash asterisk basically कहा जाए. जे तुम दरकार कौन पाई यूज करिवो तो longer explanation पाई then disabling block of code means multiple lines of code जदि तुमको disable करिवार अछि, right? Then we can go for multi line किबा multiple line comments जो थरे के हमें multiple line को disable करया पय किबा explain करया पय किछि comments देवा पय हमें multiple line यूज करबा multiple line comment यूज करबा कि multi line comment हम यूज करबा. Then type 3 तो फर्स्ट हम कौन डिस्कस करले हम डिस्कस करले कि सिंगल लाइन कमेंट एंड देन मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट कौन होची कि गोटे लाइन रे जदि हम किछि शॉर्ट नोट किबा शॉर्ट एक्सप्लेन करियार अछि शॉर्टली एक्सप्लेन करियार अछि देन वी कैन गो फॉर सिंगल लाइन कमेंट. देन मल्टी लाइन कमेंट कोन जद मल्टीपल लाइन रे टिके बिगर एक्सप्लेनेशन दरकार, राइट? भल से एक्सप्लेन करियार अछि मते कोड किबा किछि ब्लॉक्स ऑफ कोड मते डिसेबल करियार अछि जोटा कि हम कंपाइलर इग्नोर करबो से कोड को टेम्पररीली मते डिसेबल करियार अछि देन आई कैन गो फॉर मल्टी लाइन कमेंट. सो टाइप 3 जोटा कि documentation comments. So it will kind of similar to multi-line comment. We will see. So basically हमें किसी गोटे describe करियर अछि documentation basically in real time we use for documentation. केमिति यूज करबा कोठी यूज करबा ता भी हम देखिबा. तो जेमिति कि देखाओ आको बेसिकली रिप्रेजेंट करा जाय स्लैश स्टार स्टार. तो मल्टी लाइन रे कोन अछि मल्टी लाइन रे खाली स्लैश और स्टार अछि. जदि एठी देखिबा राइट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट रे स्लैश डबल स्टार अछि और मल्टी लाइन रे स्लैश और स्टार अछि. एटा डिफरेंस प्लस एठी कोन अछि दिस इज ओनली वी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन कोन मुझे तो गोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखिली एठी, राइट? देन आई विल राइट बेसिकली हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड. देखो तार माने जा भी मु ब्लॉक ऑफ कोड लिखिली ताको एक्सप्लेन करली देन तार ऑथर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देली. तो केमि देली देखो
ए पर्टिकुलर सेक्शन अछि कमेंट्स राइट एटी मु फास्ट देली एक्सप्लेनेशन कि a block of code actually कौन this method prints welcome message a block of code basically prints welcome message एट देखिबो welcome message print केमति करचंती system.out.println we already know कि हमें हमरो hello world program ना हमें already discuss करचंती then at the rate author nagesh this is basically author related information भी मु provide करछि तो kind of documentation right आको को जाय documentation हमें बुझिबा जानिबा भी केमति यूज करबा then this type of comment is used to generate documentation good code particular block right block are nothing but I am referring to methods specifically methods कौन आप भी जानिबा right तो एबे कल तुम फोकस करो कि comments ऊपर फोकस करो आउ comments को छाड़ी जा भी अछि ताको इग्नोर करो आगो को हम सिखिबा आउ यूज भी करबा जहां हम पढुचंती एबे रिपीट ही चलिबो तो तुमको घोषिबा पड़िबनी राइट रिपीट हेले शुणी तुम मन रहिबो तुम बुझी पारबो तो इट्स बेसिकली स्टार्ट विथ स्लैश डबल स्टार एंड इज मेनली यूज्ड बिफोर क्लासेस लाइक क्लास डेफिनेशन जेमति कि पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड लिखिला राइट हेलो वर्ल्ड एठी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स स्टार्ट हुए हाउ एंड हुए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट comment class level पे classes methods are nothing but this one right किछ information provide करार अछि से method block of code then interface भी अछि आगु को जानिबा right so ए तीनटा जगह रे जेतेबेले हम क्रिएट करचंती से जगह रे हम डॉक्यूमेंटेशन information provide करार अछि से पर्टिकुलर classes methods interface तो सही जगह हमें यूज करबा हमरो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट तो हम कौन पढ़ले हमें पढ़िले सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट तो नेक्स्ट हमें जानिबा कि बेसिकली कौन पे यूज हुए कमेंट्स राइट तो टू अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी हम डिस्कस करले कि रीडेबिलिटी देन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन राइट team member can understand logic easily because as I said like in the real time application right there are scenario like always like 99% scenario whatever code we write that will be very complex right एमिति कोड नै कि मन जस्ट मु 2-3 लाइन लिखुची आ ताको माने से क्लास कंप्लीट होता सेमिति नै in the real time it will be more than hundreds thousands lines of code जदि तुम ओल्ड प्रोजेक्ट सब केबे फ्यूचर रे काम करबो तो देखिबो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन सिंगल क्लास रे थिबो तो सेठी हम बुझियारो जदि अछि कि एगो कोड लिखि कि जाइथिबो ताको हम केमिति बुझिबा जदि सेठी प्रॉपर्ली मेंटेन कराइथिबो कमेंट्स लाइक जावा स्टैंडर्ड सब फॉलो कराइथिबो देन इट विल बी इजी जदि नाइ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि से कोड सब कोन लिखा है हमको जदि किछि भी जदि टास्क दियंते से क्लास भीतर मुंडो खराब हो बुझा पड़ोनी तो से मोर रीडेबिलिटी टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी वी यूज कमेंट्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक इजीली विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम देन वी कैन गो फॉर कमेंट्स यूजफुल ड्यूरिंग डिबगिंग टाइम रे भी डिबगिंग कोन आगो जानिबा तो खाली एति मन रख डिबगिंग टाइम रे भी बहुत इजी हुए टू हेल्प ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड रिवीजन ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड रिवीजन के थोड़ा कौन पे लिखा है दिस इज नॉट फॉर रियल टाइम दिस इज बेसिकली व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स और समथिंग लाइक वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइट सम काइंड ऑफ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमें जिते बड़े गोटे प्रोग्राम प्रैक्टिस करछंती हम मन रखिया पाए कि ए सेक्शन रे मते जेतलो मो इंटरव्यू हबो मो आको देखि कि मन रहि जाउ तो हां दिस इज बेसिकली लॉजिक कि ए लॉजिक एमिति काम करे जदि मु लिखिथिबी जेतबेले मते गो थ्रू रिवीजन करियार अछि मु ताको देखि मोर मन रहि जिवो मते एंटायर फ्लो देखिया को पड़िबनी तो सही जगह रे भी हमें कमेंट्स यूज कर पारबा तो रियल वर्ल्ड फैक्ट होची इन कंपनीज वी राइट क्लीन कमेंट्स राइट एंड दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल हैबिट जेमिति कहले
जदि जो मैंने फॉलो करता कोडिंग स्टैंडर्ड्स से भीतर आम कमेंट्स भी अच्छी जदि आम कमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करथिबा प्रॉपर्ली लिखिथिबा सो इट्स ए प्रोफेशनल हैबिट जो थे कि मतलब बहुत इजी हम समस्त को बुझा जाना राइट से पर्टिकुलर क्लासेस रो इनफॉरमेशन लॉजिक एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली सो से कमेंट्स बहुत सारा क्लासेस रे मुझे भी मतलब मुझे जो कौन सी क्लास लेके कमेंट्स डेफिनेटली आई यूज ईच एंड एवरी क्लासेस टू अंडरस्टैंड इट बेटर सो नेक्स्ट आम ए थियोरी पढ़ले आम प्रैक्टिकल भी देखा दरकार तो बेस्ट प्रैक्टिसेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेक्शंस ऑलरेडी देखी आम जो कमेंट्स दौरान राइट वी शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस वी शुड नॉट डू दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन आगे पढ़िया नेक्स्ट वीडियो रे वी विल लर्न वेरिएबल कौन डेटा टाइप्स कौन वी विल लर्न एवरीथिंग बट राइट नाउ वी विल ओनली फोकस ऑन कमेंट्स कि दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन जो थे कि कमेंट्स लिखा है स्टोरिंग 10 इन ए दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल दिस इज नॉट मीनिंगफुल दिस इज नॉट मीनिंगफुल आमको सर्ट ये किसी लिखार जे देखिले जानी दिस इज समथिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कि ये स्टोर होमको सेमती किसी लिखार ना दिस इज अननेसेसरी आमको एक्चुअल कौन करार अच्छी जदि किसी समथिंग लाइक दिस आमको कौन लिखार ना वाई कौन पाई सब लिखा राइट मीनिंगफुल कमेंट्स ये कौन लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राई अटेम्प्ट अलाउड सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राई तो से एक्सप्लेन करने लिखा था कि वाई वी हैव रिटन बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिट्राई अटेम्प्ट अलाउड इनसाइड द एप्लिकेशन तो से लिखा था कमेंट्स जो थे कि यूजर देखिए जाने ओके ओके दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बेसिकली रिट्राई सो से पर्टिकुलर कमेंट दिखाई कि वेरिएबल एमती डिक्लेयर कराई वैल्यू एमती असाइन होती जमती कहली रूल हो कि कमेंट लिखा जीव वाई नॉट बेसिकली फॉर व्हाट वी शुड नॉट राइट वाई वी शुड राइट लाइक वाई इट इज यूज्ड कि तार लॉजिक कौन राइट केमती यूज होची ताको एग्जैक्टली देखिबा सो दैट any developer anyone revisit that particular blocks of code or classes they will understand it better so practical example now let's understand this is basically one class I have example I have written where there is a student class जो there main method अच्छी main method भीतर हम सब गोटे like in real time example मुझे गोटे particular student रो जदि दी जन मार्क्स अच्छी लेट्स से 85 or something I have assume 85 मार्क अच्छी तो जदि कंसीडर करार अच्छे कि लेस देन 40 जदि मार्क अच्छी तो से स्टूडेंट फेल और जदि ग्रेटर देन 40 अच्छी देन से स्टूडेंट पास तो दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ इमेजिनेशन एग्जांपल है बट इन रियल टाइम इफ यू सिक्योर 30% राइट सो यू विल बेसिकली कंसीडर एज पास्ट स्टूडेंट तो मार्क मुझे ये 85 सो ये एक्सप्लेन कराई लॉजिक को एक्सप्लेन कराई कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 स्टूडेंट पासेस तो से कोड ये बेसिकली लिखाई दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड ये एक्सप्लेन कराई कि मार्क जदि ग्रेटर देन 40 रहा देन ओनली द स्टूडेंट कंसीडर्ड एज पास अदरवाइज दे विल बी फेल तो से एक्सप्लेन कराई दिस इज कमेंट्स ये जगह ये कमेंट्स दिया जाए जदि मत डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देवार अच्छी क्लास लेवल रे दिया जाए राइट मेथड लेवल रे दिया जाए इंटरफेस रे दिया जाए सो नाउ वी लर्न एवरीथिंग एज ए थियोरी वाइज बट राइट नाउ वी विल प्रैक्टिस एंड वी विल सी बिकॉज आवर मेन गोल कौन थियोरी पढ़ा ना मेन गोल अच्छी थियोरी सहित प्रैक्टिकल करवा so that we will understand each and everything real time so let's get started let's see like how we can do practical so now let's understand practically तो already मैं open करছি हमर hello world program जो तरी आज हमें practical करवा comments तो let's understand okay let's see practically so this is I have given
double slash. After that, whatever you will put, that will gray out, right? That will ignore by our compiler. So we'll say this is single line comment, right? Comment ପରେ ମାନେ ଡବଲ ସ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ସିଏ ଗ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ବି ଯଦି ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ଦେବା, ରାଇଟ୍, ସେ ଗ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆଣିବା ଗ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା, ଦେଖ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ which not ignored by the compiler। ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ଅଛି ଡବଲ ସ୍ଲାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ। ତ ଡବଲ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟର କ'ଣ, which means like multi line। ଡବଲ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍। ସୋ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ, ସ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର। ଦେଖ ସବୁ ଗ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ starting comment, we have to end also, right? So if I enter, then ଆସିଲା କ'ଣ, ସ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର। ତ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ। This is multi-line comment. Here we will put multiple line to explain the logic of the code, right? So multiple line, so 10 lines of comments also you can add it. Our multiple भी add कर पाएगा, like this multiple, this also you can add multiple. Single line means that is not something गोटे line, like same type of comments you can put in multiple comments, right? ताको रिमूव कर दे दरकार नहीं, तो just for our understanding मैं add करता हूँ। तो first कौन जान ले, this is single line comment, this is multi line comment। so next रहिला कि documentation comment। documentation comment कौन, documentation comment में स्लैश डबल स्टार तापरे एंटर। तमारा देखो कौन आसला डिफरेंस, देखो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट जो कि स्लैश स्टार तापरे क्लोजिंग रोची स्टार स्लैश मझिरे तुम जेते एंटर देखो मु टाइप कर जाउची स्टार आगो आगो आसीबो, माने जेते लाइन आसीबो ता पूर्वरो स्टार आसीबो। दिस इज documentation comment। comment लिखिबा कि author, देखो author नागेश आसला, then class name मैं लिखुची hello world, created date आज जाबी date, right? something 17 Feb 2026, something like this। कौन this is something documentation। तो कौन देले कि this is documentation comment, तापरे author ना कौन नागेश, you can put your name, then class name कौन, this is the class name, और created date 17 Feb 2026 रे एक क्लास बेसिकली क्रिएट होती। तो जो भी डेवलपर आसबे से देखिए हाँ एक्चुअल कौन ए क्लास रो बेसिकली यूज। तो से फास्ट देखिए एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जदि आम रियल एक्सप्लेनेशन देबा, दिस इज ए hello world program to get started java programming। तावाने इना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जोटा कि टू स्टार्ट करया पे हमर जावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल स्टार्ट करया पे एक क्लास हम क्रिएट करछन्ते। तो
तो गोटे मीनिंगफुल कमेंट देले तापर ऑथर तापर क्लास ना कौन देले तापर क्रिएटेड डेट तो ये सब देले दिस इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट दिस इज मल्टी लाइन कमेंट दिस इज सिंगल लाइन कमेंट तो चलो एबे देखिबा कि आमे जहाँ प्रैक्टिकल देखी थिले आम थियोरी जेतबे पढ़िले ताको आमे केमती आमे प्रैक्टिकल करबा तो आम अधिक फोकस न करके व्हाट एग्जैक्टली द कंटेक्स्ट इज इनसाइड द क्लास ताको आम फोकस न करके आमे खाली फोकस करबा कि कमेंट्स रिलेटेड इनफॉरमेशन को फोकस करबा तब तो आमे डाइवर्ट हबा थी सो आ गोटे क्लास मु क्रिएट करछि और लेट मी copy and paste this right ako koiba comment practice comment practice class asila comment practice ये सब रिमूव करो सॉरी आमे बेसिकली देखी स्टूडेंट क्लास राइट तो जो आम क्लास ना चेंज कर मेक श्योर कि तुम फाइल नाम भी चेंज कर फाइल नाम कौन चेंज करवा राइट क्लिक करवा रीनेम को आस राइट रिफैक्टर स्टूडेंट क्लास कन्वर्ट कले कि रीनेम कले तो आम कौन दबा आउ थे माने गोटे रियल टाइम रे केमिति यूज करा जाय से बळे आमे प्रैक्टिस करबा आमे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करबा @ author नागेश देन this class is to hold student related information created date दे दबा 17/5/2026 right class name then we'll give something like this right तो हमें कौन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स देले ए पर्टिकुलर क्लास रो then we will go for int mark right then we'll give 85 थिला हमरो एग्जांपल जा हम देखिले हमरो थियोरी जेतला हम पढ़ले राइट तापरे गोटे मेथड क्रिएट कली ना मेन मेथड भीतर हम प्रैक्टिस करबा राइट ताको मेन मेथड भीतर मूव करबा कंफ्यूज होनी हम सब किछ पढ़िबा एबे खाली फोकस करो कि हम एग्जैक्टली हम कोन करतंती राइट मु कहितली एठी हम एमती डिक्लेयर करियानी माने कमेंट्स देवानी कि mark is 85 or something like this करबानी we should not do this or this is not recommended but what we should do it कि गोटे जदि सेमती किसी लॉजिक लिखा जाए जदि गोटे स्टूडेंट रो मार्क 40% क्या 40 रो अधिक नहीं तो से बेसिकली फेल लिखा so mark greater than 40 is basically pass right तो यही जगह हमें एक्सप्लेन कर पारबा तो सिंगल लाइन रे भी एक्सप्लेन कर पारबा सिंगल लाइन कौन एक्सप्लेन करबा if student marks is 40 is greater than 40 then the student is pass the exam right एमती किसी एक्सप्लेन कर पारबा ना को जदि मल्टीपल लाइन रे एक्सप्लेन करार अछि सेम जिनस को हमें मल्टीपल लाइन रे भी एक्सप्लेन कर पार
40 then the student is pass the exam, right? एमती भी एक्सप्लेन कर पारे कि बिलो लाइन जहाँ भी आम लिखी तार मीनिंग अच्छी या तो एमती भी एक्सप्लेन कर पारे जब सिंगल लाइन रे जो रिप्रेजेंट करार अच्छे एमती भी एक्सप्लेन कर पारे तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक को जो रिप्रेजेंट करार अच्छे देन तुम एमती भी एक्सप्लेन कर पार. So this is what we have discussed while learning. I hope जहाँ भी आम थियोरी प्लस प्रैक्टिकल कले तुम बुझी पार्थिव. दिस इज वेरी सिंपल, राइट? हम जहाँ भी डिस्कस कर सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट आउ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट केमिति आम यूज करबा ता भी देखिले, थियोरी बेसिस रे भी पढ़िले प्लस प्रैक्टिकल भी करिले. होपफुली तुम बुझी पार्थिव. जहाँ भी डाउट अच्छी तुम आम व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप रे जॉइन हुआ जोटा कि तार लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन रे, सेठु जाई जॉइन हुआ किंबा तुम कमेंट्स भी कर परिबो जदि किसी डाउट अच्छी. हम डाउट क्लियर सेशन भी रखिबा समस्ते, बिकज समस्ते बुझिबा दरकार, राइट? आउ पढ़िबा मे बी तुमको इनिशियली कन्फ्यूज लगी पारे, बोर लगी पारे, बट दिस इज द प्रोसेस. हम धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल करवा, राइट? प्रैक्टिकल तार आउटपुट देखिक ही मजा लगे. सो दैट इज व्हाट वी वांट. हमें पेशेंस सहित पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, माने एमती हबानी कि केबे कंप्लीट हम मुझे जब कर ना, हमको शिक्षार अच्छे भल्रे. जब भल्रे शिक्षार अच्छे टाइम देवा पड़ो. जल्दी जल्दी शिक्षार अच्छे तुम ऊपर ऊपर पढ़ी पढ़ी जीव भीतर किसी बुझीपार. इनडेप्थ नॉलेज रखा, समस्ते पढ़ा दरकार, समस्ते बुझा दरकार. से आम धीरे धीरे पढ़ा, टी टाइम नहीं कि भी पढ़ा. तो होपफुली तुम डेली बेसिस रे जहाँ भी पढ़ प्रैक्टिस कर गो थ्रू कर बिफोर यू स्टार्ट एनी वीडियो, राइट? तापर जहाँ भी पढ़ प्रैक्टिस कर, गो थ्रू कर, रिविजन कर. ओके, सो समस्ते भावुची फॉलो कर. तो ये वीडियो को ये कंप्लीट करवा. देखा नेक्स्ट वीडियो आम शिखा वेरिएबल्स जहाँ भी आम प्रैक्टिस कर आज ताकू रिलेटेड ही वेरिएबल वीडियो रहिबो. तो लेट्स फोकस ऑन थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल अधिक फोकस करवा, सब जिन शिखा. टिल देन टेक केयर. देखा नेक्स्ट वीडियो.